Hello बच्चों, let us read the question. Scientists are working hard to develop nuclear fusion reactor. Nuclei of heavy hydrogen 1H2 known as deuteron and denoted by D can be thought of as a candidate for fusion reactor. The D-D reaction, which is 1H2 plus 1H2 giving 2H3 plus neutron plus energy. In the core of fusion reactor, a gas of heavy hydrogen is fully ionized into deuteron nuclei and electrons. This collection of 1H2 nuclei and electrons is known as plasma. The nuclei move randomly in the reactor core and occasionally come close enough for nuclear fusion to take place. Usually the temperatures in the reactor core are too high and no material wall can be used to confine the plasma. Special techniques are used which confine the plasma for a time t0 before the particles fly away from the core. If n is the density, that is number per volume of deuterons, the product n t0 is called the Lawson number. In one of the criteria, a reactor is termed successful if Lawson number is greater than 5 into 10 to the power of 14 per centimeter cube, seconds per centimeter cube. It may be helpful to use the following. Boltzmann constant K is equal to 8.6 into 10 to the power of minus 5 electron volt per Kelvin. E squared by 4 pi epsilon naught electron volt meter is equal to 1.44 into 10 to the power of minus 9 electron volt meter. In the core of nuclear fusion reactor, the gas becomes plasma because of A. Strong nuclear force acting between the deuterons. Option B. Coulomb force acting between the deuterons. Option C. Coulomb force acting between deuteron-electron pairs. Option D. The high temperature maintained inside the reactor core. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन. तो जब भी टू लाइट न्यूक्लियाई को कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस प्रोसेस, जिस प्रोसेस पे दो लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक हैवी न्यूक्लियस बनते हैं, so that process is called as nuclear fusion. So two light nuclei fuse to form a heavier nucleus by and releasing large amount of energy and releasing large amount of energy. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है विच दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन कि दो ड्यूटरॉन atoms fuse होके they will give you a isotope of helium 2He3 plus neutron plus energy. तो ऐसे रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले ये देखते हैं कि हाउ इज प्लाज्मा फॉर्म्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर. प्लाज्मा फॉर्मेशन in a nuclear reactor. तो जब एक न्यूट्रल गैस हीटिंग अ न्यूट्रल गैस टू अ हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हीट करते हैं और उससे सच दैट क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर removed from their removed and the atom is ionized.
So plasma is essentially formed due to a very high temperature. तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे ये दिए है, in the core of the fusion reactor a gas of heavy hydrogen is fully ionized into deuteron nuclei and electrons. तो हाइड्रोजन गैस को लेके, हाइड्रोजन इज H2, तो उसको लेके आयनाइज करते हैं such that you get a deuteron nuclei and electrons. तो ये जो ड्यूट्रॉन न्यूक्लियाई है वो चार्ज्ड है, द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो चार्ज्ड. So plasma is essentially, plasma consists of a collection of charged entities in a confined volume. Charged particles या charged entities in a confined volume, इसको प्लाज्मा कहते हैं. तो क्योंकि हाई टेम्परेचर से ये आयोनाइजेशन को अचीव कर रहे हैं, सो द प्लाज्मा इज एसेंशियली फॉर्म बिकॉज ऑफ अ हाई टेम्परेचर. तो अभी क्वेश्चन पे जाके हम करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं. इन द कोर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर द गैस बिकम्स प्लाज्मा बिकॉज ऑफ, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द हाई टेम्परेचर मेंटेन इनसाइड द रिएक्टर कोर. So that is option D. Hope you have understood it well. Best of luck.